स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। ये मुहिम नहीं, ये जंग है। ये जंग है क्योंकि ये पानी की जंग इस देश की सबसे अहम जंग है। ये समझिए, सबसे अहम जंग है। अगर इस देश में सब कुछ, जो जितनी भी हम बातें करते हैं विकास की, अर्थव्यवस्था की, सब पानी से जुड़ा हुआ है। रंजीत सिंह दिसाले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे रूबरू होना वाकई फख्र की बात है। रंजीत सिंह जी, हमारे दर्शक आपने जरूर जाना चाहेंगे कि आपने ऐसे 2-3 क्या बदलाव किए जिनकी बदौलत शिक्षा के अहम क्षेत्र में बच्चों की मुश्किलें कम हो गई। ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने क्या किया कि जो कुछ हम हमारे स्कूल के बच्चे जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं, मान लिए वो घर में कितना लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, घर में कितनी यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे गांव में टेम्परेचर कितना है, इसका उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन शीट बनाया। और वो ऑब्जर्वेशन शीट के उनको पता चला कि जब 1 डिग्री से तापमान बढ़ जाता है तो हम कितना लीटर पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कितना बिजली का खपत ज्यादा होता है। तो बच्चों को ये पता चल गया कि जैसे ही टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी तो हमारा पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन बच्चों ने एक एनालाइज किया इस डेटा को और उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि जितना भी पानी अब हमारे गांव में है वो हम कितने महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बारिश ना आ जाए तो हमारे लिए प्लान बी क्या होगा। तो बच्चों में वो एक अवेयरनेस क्रिएट होगा, जितना भी पानी है उसको सिर्फ हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम ये जो आज वाटरथॉन कर रहे हैं उसका उद्देश्य साध्य होगा। Let's go to our next guest, who's also a bit like Akshay, in fact from the same area, in the sense that Bollywood star, also with a heart, does a lot of work for the environment and social causes, and once acted in a film with me which lasted for 1 weekend. Her only bad mark in her entire career. And she's also the Bollywood superstar. She's also UN Goodwill Ambassador. I must not forget that. सबसे important, she's a UN Goodwill Ambassador. No small glory for us. Please welcome the beautiful, the ravishing, the lady with a big heart, Dia Mirza. Thank you, Cyrus. I've been listening to you, and I have to say that this is such a serious, such an important campaign, and it's just wonderful to see the amount of mirth you've been adding to it. All right, first question for you, Dia. You're very conscious about how you run your house, which is something you tell me because we talk every day, Har din phone pe, about garbage segregation, recycling of water. In fact, you have convinced many in your area and on the internet to follow in your footsteps. So how did you start this and why actually? It started almost 10-15 years ago, Cyrus, when I was a part of Anandana Foundation, which basically works towards creating check dams and recharging groundwater. And while I was working with them, I discovered how badly affected we are by climate change and by the misuse of water in our country. And so one of the first things that you do when you discover such things is you want to know how you can as an individual make a difference. So one of the first few things that we managed to implement in our co-op was to install water check meters. So it's technology that you install in your water tanks, in your compound, in your building, and that in itself ensures absolutely no leakage and overflow of water. Just by installing this water check meter system, we've saved thousands of gallons of water. It makes a big difference. मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस मुहिम के साथ जुड़ पाई हूँ और अपनी तरीके से थोड़ा बहुत कुछ कर पाती हूँ। वाह, थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू। एक काम करते हैं, आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना? परफेक्ट। हाँ, जरा एक बॉल देखते हैं। बस अभी ये इतना स्टाइल से शॉट मारा ना, अब मैं बैट चेंज करता हूँ, आप शॉट मार के दिखा। कैन वी जस्ट चेंज द बैट प्लीज? कम। We've got somebody who's got a different bat. Vikas Kataria is with us. And since we are talking about cricket, we've got a cricketer with us. Hi, Smriti. Come on, come on. Yeah. Can you bat with this? But I'm going to ask Vikas Kataria here, what's the thought behind this bat? There are 75% of the people in the country who do not have water at their homes. They have to go out. And that's what this bat depicts. 75% लोगों के पास पानी नहीं है, तो वो अपना विकेट कैसे बचाएंगे? हाँ,
सो आप बिना बैट के कैसे डिफेंड करेंगे? तो ये आइडिया आया कैसे आपको? अक्षय, भारत में क्रिकेट ही एक ऐसा धर्म है जो सब लोगों को 130 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ देता है जी। तो वाटर एड में जब हमने ये सोचा कि इस बात को अवेयरनेस तो जल जीवन मिशन के बाद लोगों में काफी आई, तो नेटवर्क 18 या आप जैसे लोग जब जुड़े इसके साथ, तो इसको और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, और वो लोग हमारी मुहिम के साथ जुड़े जिसे हम कहते हैं बैटिंग फॉर वाटर. Smriti, what would you like to say? Everyone apparently knows how to bat, and they even if they watch cricket, they'll be like, "अरे ऐसा खेलना चाहिए था, वैसा खेलना चाहिए था." So I think everyone knows how to bat, and so if everyone gets to know that we can't actually bat with 75% of the bat, so it's very easy for them to understand that we can't live without 75% of water. So I think this is the very easiest way to give out this message to all the people in India. I'm going to hand it across to Managing Editor CNN News 18, Zaka Jacob, who's joining us live from the national capital. Over to you, Zaka. Thanks a lot, Anand. Joining us now is Bollywood actress Neha Dhupia, also a very strong voice against climate injustice. Thank you very much, Neha, for speaking with us here on the Waterthon. On a day when the nation celebrates 72 years of being a republic, do you think it's time now that we start looking at conserving our environment, conserving our water resources, also making it an integral part of our duties to the nation? If you have a voice, you should know how to use it. And to start or spark a revolution or to make a change, ये नहीं है कि हमको पहले भीड़ इकट्ठी करनी है. हम एक इंसान के साथ भी शुरू कर सकते हैं. Like if I tell even the girls who are working at home कि जब आप बर्तन धोते हो तो जरूरी नहीं है कि जब बर्तन धो रहे हो तो पानी चलता ही रहेगा. Or to introduce, the way I started as a mom was just to introduce my daughter to a bucket bath. There's no need to shower क्योंकि फिर तो पानी चलता ही रहेगा ना. So it's not like it's not already happening, and the future is very scary if we don't do anything about it right now. We now have a very, very special guest here with us, 9-year-old Discipriya Kangujam. He is a child environment activist from India, one of the youngest climate activists globally. I have started a new initiative called Monday for Mother Nature, where I plant thousands of trees with the school children every Monday with the mission to plant 1 million trees every year. So far, we have planted over 3.5 million lakhs trees. I'm just 9 years old. Yes. Why should I worry about the climate change? Why should I talk to the people about the various environmental issues facing in the world, facing by the people in the world? Why should I concern about the global warming happening in the world? Why should I talk about the global water crisis happening in the world? Each and every child living in this country, living in this world, are already the victim of climate change. So I'm fighting to save our planet and our future. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Well, let us now quickly move on here on the Harpic Mission Pani Waterthon and listen to Vijay, who's a sanitation worker in Nagpur. I say was because he's now the epitome of Atmanirbhar Bharat after having received vocational and professional training from the World Toilet College in Aurangabad. Akshay. हाय विजय. Namaskar. नमस्कार जी. मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने आपकी लाइफ कैसे बदला? सर, पहले हम जो काम करते थे तो वो हाथ से करते थे, और जब वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज 2-2.5 साल पहले खुला औरंगाबाद में, तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, ये कॉलेज बोले तो टॉयलेट के लिए कॉलेज, आर्ट्स सुना था, कॉमर्स सुना था, साइंस के लिए कॉलेज सुना था, टॉयलेट के लिए कॉलेज सुनने में अजोबो गरीब लगा. लेकिन आपकी और मेरी कहानी ऐसे ही है, क्योंकि मैंने भी जब फिल्म बनाई टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये कैसा टाइटल है? ऐसे भी हो सकता है क्या? हाँ, बोले. लेकिन सर, उसमें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया. सर, अभी जैसे कि हमें सीवर में उतरना होता था तो बिना उसके सीवर में उतर देते. वहां जाने के बाद पता चला हमें सीवर में उतरने के लिए हमें गम बूट पहनने चाहिए, रेनकोट पहनना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए. हाँ. ये सब चीजें वहां जाके पता चली. जब वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में जाने के बाद हमें जब वर्दी मिली तो हमें एक आत्मसम्मान प्राप्त हुआ. मैं आपके गले लगना चाहूंगा. वाह. हाँ, ओके. बहुत बढ़िया काम करते हैं. बहुत बढ़िया काम. बहुत बढ़िया विजय, फैंटास्टिक.
And let's keep the spirit going and move on to another very special guest joining us, Tanveer Inamdar, founder of the Tree Innovative Foundation, who could be holding his hands in his hands a solution that could give relief to millions of women. ये नीर चक्र है. हाँ. नीर चक्र ये संस्कृत वर्ड है जिसमें नीर का मतलब है पानी और चक्र का मतलब है कंटिन्यूअस साइकिल. So how does this work? ये नीर चक्र कैसे काम करता है? I thought let's combine the ancient invention and the new modern technology together, and I come up with the Neer Chakra. It can carry around 80 liters of water in a single cycle. 80 liters. 80 liters of water in a single cycle. So when it comes on 80 liters, they need to fetch only one cycle. Then it has the gyroscopic stabilizer. You can see it is full of water. And it has a gyroscopic stabilizer. So please. So it has a complete gyroscopic stabilizer. That means हमारे जो गांव के रोड है वो काफी अजीब है. So suppose कोई रोड खराब आ रहा है और it gives a stability to the body. Okay. If you also see, sir, it has the suspension system with a 40 mm actuation capacity. This 80 liter for one family is enough for a week. If we calculate the requirement of a Pada families, their mainly requirement is around 100 liters to 120 liters. 100 liters. 120. So it can complete their basic requirements. Thank you very much, Tanveer. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Let me introduce our audience to someone who's very truly special. Bengaluru's S. Vishwanath, also known very popularly as the Zen Rainman. How and when did you embark on this work? Talk us through this journey of yours. 1991, when we started to build our house in Bangalore, it was pouring. A lot of rain was going into the drain, and we were buying water from a tanker, paying $1,000 at that point of time, and we thought there was something stupid going on. So we started then to think about rainwater as a resource and try to see whether we could put it to productive use. So 91 is when the journey began. Our mission is to get 1 million wells for Bangalore with the traditional well digging community to harvest the rainwater, put it into the wells, get the aquifer up, and make sure that the city has plenty of water. जी हाँ, हार्पिक नेटवर्क 18 मिशन पानी में अब हमारे साथ होंगी पद्मश्री गायिका मालिनी अवस्थी जी. मैं कलाकार हूँ. बतौर कलाकार बहुत उत्साहित भी हूँ और बहुत गर्वित कि आपने हमको जोड़ा है. मैं गाने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ भैया कि हमारे यहाँ हमारे संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने हमारे पूरे जीवन में जल का सम्मान ऐसे जीवन शैली में जोड़ करके गूंथ करके रखा. वे जानते थे कि जल है तो जीवन है. आज जो यूएन कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हमारे पूर्वज बहुत पहले से जानते थे. उठते बैठते जीते जागते जल का सम्मान. जो मैंने गीत रचा है मैं वो सुनाती हूँ. बिना पनिया के हो रामा जिंदगी कैसे बीती, बिना पनिया के हो रामा जिंदगी कैसे बीती, अरे कैसे बीती हो रामा कैसे बीती, कैसे बीती हो रामा कैसे बीती, बिना पनिया के हो, बिना पनिया के हो रामा देखो जिंदगी कैसे बीती. अरे पानी ना हुई है ता भैया कैसे जिंदा रहिबो, अरे पानी ना रही है ता भैया कैसे जिंदा रहिबो, अरे खेतन मा दलहन गेहूं चाहर कैसे बुई हो, अरे खेतन मा दलहन गेहूं चावर कैसे बुहियो, अरे पानी हमरा अमृत हो, बिना पनिया के हो रामा जिंदगी कैसे बीती, बिना पनिया के हो रामा जिंदगी कैसे बीती. क्या बात है मालिनी जी. नमस्ते. बहुत सुंदर गीत रचा आपने, गीत गाया. You stay connected with us, ladies and gentlemen. Here's a call to action. Take the Jal Pratigya. Join us in this movement. This has to become our collective movement. Mission Pani. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी. सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों.
नदी रो रही थी, तब कहा थे तुम स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। वाह, शानदार परफॉर्मेंस। ये थे हाइड्रोमैन, भारत के पहले अंडर वाटर डांसर। We are very privileged today to be joined on this waterthon by General M.M. Naravne, the Chief of Army Staff. General Naravne, thank you very, very much for being with us today. I know it's an important day for the armed forces, but you have taken time out for us as well. The army in one sense is just like water, essential and omnipresent. Wow, that being said, the army's role is not only fighting wars, but also helping in nation building. This includes taking care of our local environment. In fact, the Army's mission, wherever units go and deploy, is to improve the ecology of its surrounding areas, which includes the water table. Even in operational areas, we ensure water preservation both through our units and by assisting local communities in their endeavors. We have executed a number of water conservation projects for the benefit of our citizens, like creation of ponds, wetland rejuvenation, drain treatment, and groundwater recharging. Some significant activities including revival of the Macpherson Lake at Allahabad, creation of water harvesting ponds at multiple locations in Maharashtra, Kokrajhar in Assam, Chamoli and Pithoragarh in Uttarakhand, Samba in J&K, Jaisalmer in Rajasthan, and at the Bhatti mines, Asola at Delhi. I want to tell them to fight for the well-being of our planet with all their might. We in the Olive Greens will take care of the external threats to our country, but we need equally motivated fighters with a never-say-die attitude to preserve and conserve water. I wish them all the best and assure that the Indian Army is always there to assist them. Thank you. Joining us is a very, very special guest. Vedika ji is right here. Why don't you walk up, Vedika ji, as I introduce you. Vedika Bhandarkar, Chief Global Impact Officer of Watertalk. So, Vedika ji, not many people actually know that you actually started off as a banker. That's right. And from that, a stellar career as far as banking, you moved to the field of water conservation. World Bank कहती है कि पूरे world में for everybody to get access to safe water and sanitation, $114 billion per year is required. The amount of money which is spent is just under 30 billion. So there's a huge gap. So हम लोग लोन नहीं देते हैं, financial institutions India की लोन देते हैं. अगर आपने लोन लिया, आपने water connection लिया या फिर rain water harvesting tank बनाया, आपने पैसा मुझे वापस दिया, मैंने इनको लोन दे दिया, इन्होंने भी बना लिया, इन्होंने पैसा वापस दिया, आनंद ने बना लिया. तो इससे same amount of money बहुत दूर तक खिंच सकता है. Aditya, welcome. Welcome. We've heard you create comic books to promote water conservation among children. Sounds fascinating. Do tell us more. Well, I am working with the Climate Reality Project, which is an international organization on climate change. The problem when I saw was when I started working and started talking to children and the community in the country was that it's very, very difficult to get through the message. People are not understanding. People are not able to get in what ways of harm they are standing. So in such situation, I thought probably comics would be a good way of communicating with the children about what are the dangers. So I've written about 8 comics for children on various environmental issues. Join us on stage, please. आपको देखते ही मैं पहचान गया. You need no introduction. Lakshmi ji, please come up. हम सभी को एहसास हो कि कितनी बहनें, कितने लोग पानी के लिए कितनी दूर-दूर तक जाते हैं और ये मजाक नहीं है. कभी हम नल छोड़ते हुए ब्रश कर रहे तो छोड़ देते हैं. क्योंकि मैं पानी से इसके लिए अपने आप को जोड़ती हूँ क्योंकि हमने किन्नी सर्विसेज जब शुरुआत करी तो पहली प्रोजेक्ट हमने पानी के साथ किया कि पानी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, हम पानी को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट और वॉयलेट करते हैं. I'm going to quickly bring in somebody who also wants to do something special. Sudarshan Patnaik, we just showed what he's done. He's the man behind Puri's iconic sculptures and he's joining us live now. Sudarshan ji, namaste. Thank you so much. Thank you so much. Sand artist. Oh, look, wow. Yeah, this is what he's made for us at Mission Pani. Yeah. हमारा इतना अच्छा ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है इंटायर कंट्रीज में और जो पानी समंदर का है आप देख सकते हैं पीछे कितना ब्लू और कितना ब्यूटीफुल वाटर है. तो मैं हर टाइम कोशिश करता रहता हूँ कि सैंड आर्ट के थ्रू भी लोगों को ये सचेतन करने के लिए कि आप पानी के अंदर कुछ मत डालिए. इन्होंने मेरे बर्थडे पे भी एक बार बनाया था. Am I right, सुदर्शन जी?
और ये इतना बढ़िया आप बनाते हो। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी, इतनी कला है आपके हाथों में, इतना जादू है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। India's most iconic fusion rock band, Indian Ocean, joining us right now